अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने लगी है। बहुत से स्टूडेंट्स जो कि मुझे इनबॉक्स करके भी पूछ रहे थे कि डेट सिलेक्शन कब करनी है, हमें कब और कैसे करनी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे सिलेक्ट करनी है डेट, और बहुत जल्द जो है वो डेट सिलेक्शन ओपन होने लगी है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि आपने कैसे अपनी डेट सेलेक्ट करनी है और कहां से जाकर करनी है। You will see a schedule button on your dashboard after successfully logging in. Click Schedule button. After clicking, you will see your pre-scheduling information based on first come first serve according to your payment. To schedule your exam, choose city. Then choose Exam Center. You will see the days on the calendar on which the exam is conducting. Click any date to see availability. Once you click any date, you will see the sessions on the right side of your screen with the available seats. If there are no available seats at that session, you cannot select it. Click the button to confirm your desired schedule. Click Yes button to confirm. If there are available seats at that session, just click the session and confirm your schedule. You can change your schedule as many times you want. If you will not see your pre-scheduling information, you can still schedule based on the availability. You can also change your desired session in which you want to attempt the exam. Click to confirm your desired scheduled exam and continue. जी, तो ये था पूरा ट्यूटोरियल कि आपने कैसे MDCAT की डेट सेलेक्ट करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनकी भी परेशानी दूर हो और वो अपनी सुकून से तैयारी कर सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।